our society. But our little kids, they are also not lagging behind. They are also doing something extraordinary. हमारे छोटे छोटे बच्चे, they also can do something extraordinary. Okay, now I'm going to call a student of class KG2. Can you believe? A student of KG2 from Pakistan Islamia Higher Secondary School, Sharjah. She found 13,000 dirham on the road in Sharjah. शारजा में किसी रोड पर 13,000 दिरहम से मिले जो इन्होंने ऑनर तक पहुंचाए, और वो रकम किससे रिलेटेड थी, किससे मुतालिका थी? वो स्टूडेंट की फीस, एक अरब स्टूडेंट. Honesty is always awarded. It can be awarded thereafter. It should be awarded over here. So give this little kid a huge round of applause. Okay. अभी जिनको मैं बुलाने लगा हूं पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर, और साथ में सिविल इंजीनियर के होने के साथ साथ वेल नोन पोइट, कॉलमनिस्ट, poet and the member of organizing committee for our society. But our little kids, they are also not lagging behind. They are also doing something extraordinary. हमारे छोटे छोटे बच्चे, they also can do something extraordinary. Okay, now I'm going to call a student of class KG2. Can you believe? A student of KG2 from Pakistan Islamia Higher Secondary School, Sharjah. She found 13,000 dirham on the road in Sharjah. शारजा में किसी रोड पर 13,000 दिरहम से मिले जो इन्होंने ऑनर तक पहुंचाए, और वो रकम किससे रिलेटेड थी, किससे मुतालिका थी? वो स्टूडेंट की फीस, एक अरब स्टूडेंट. Honesty is always awarded. It can be awarded thereafter. It should be awarded over here. So give this little kid a huge round of applause. Okay. अभी जिनको मैं बुलाने लगा हूं पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर, और साथ में सिविल इंजीनियर के होने के साथ साथ वेल नोन पोइट, कॉलमनिस्ट, poet and the member of organizing committee for